travel करती हूँ, then I love to explore the food of the city that I'm in. और वाराणसी की आलू कचौड़ी, वहाँ की जलेबी, दूध जलेबी, वहाँ का पान, ओ माय गॉड, वहाँ का चाट, आई रिमेम्बर हर शाम हम वहाँ चाट खाते थे। तो ये कुछ चीजें हैं जो बिल्कुल ही आई डोंट थिंक वो कहीं और मिल सकता है जो वहां मिलता है, जो आपको मिलती है NMIMS के पास। और I love going out to eat Chinese actually. So I love Okay. food which is Okay. in Kolaba and in Andheri. And Okay. I love this place called Veranda in Bandra, which has Okay. really amazing food. Okay. तो एक सीन है शो में जिसमें वो कहती है अपनी रूममेट को कि काशी की पवित्र भूमि पे अगर तूने मल्टीपल प्रेमियों के साथ बात की ना तो तुझे शोभा नहीं देगा ये, समथिंग लाइक दैट शी सेज, How एंड cute. दैट इज समथिंग दैट वी came up with during while we were shooting it. So I think वो थोड़ा चैलेंजिंग था पर बहुत एक्साइटिंग भी था। वेरी लाइट हार्टेड शो के यूपी Yeah. 65 एक सिटकॉम है Hmm. और इट्स अ कमिंग ऑफ एज स्टोरी ऑफ दिस character called Nishant who falls in love with my character Shubra, and I think everything that we've shot is just has been so much fun. It's been very now that you've put me on the spot, I can't think of one. I can just think of so many. हमने कहा है हम शूट कैंसिल कर रहे हैं क्योंकि ये कास्ट बहुत डिमांडिंग है। अगर आप लोग रेडी हो, आप बस से जाओगे तो शूट होगा, और वैनिटी वैन नहीं होगी, बस में आपको रहना पड़ेगा, अदरवाइज द शूट इज कैंसिल्ड। एंड आई गॉट रियली स्कैर्ड बिकॉज दे सेड फ्रॉम नाउ ऑन बजट कटिंग डाउन द बजट, और अब से शूट नहीं होगा, आपको ऐसे करना पड़ेगा बिल्कुल शूट, अब झाड़ी के पीछे चेंज करना पड़ेगा, ऑल ऑफ दैट। और ये मेरा पहला शो है तो मुझे कुछ पता नहीं, मैं बिल्कुल शांत थी। And after a point, I realized that the whole team was involved in just pranking me because I Okay. pranked everybody in the show. Okay. And I believed it. And Okay. there were two teams, and they put me on the spot, and I got so scared. तो कुछ ऐसी एडवाइस जो आप एस्पायरिंग एक्टर्स और एक्ट्रेसेस को देना चाहेंगी हु वांट टू ट्राई देयर प्रॉस्पेक्ट्स फॉर थिएटर और फॉर वेब सीरीज़, हाउ टू गो अबाउट इट, क्या प्रोसेस होता है, वो कैसे ऑडिशन दे सकते हैं, कैसे पता कर सकते हैं कि कहाँ पर ऑडिशन देने की ज़रूरत है, और फिर ऑडिशंस के टाइम में किन चीज़ों का ध्यान रखना ज़रूरी है, थोड़ा सा अगर ब्रीफली इफ़ यू कुड थ्रो लाइट ऑन दिस। Of course, absolutely. Because I think for anybody who begins their journey as an actor, आपने बहुत अच्छा question पूछा है. I really would like to applaud you on that. Because for every aspiring actor, it's a very it's a road not taken. किसी को नहीं पता होता कि क्या करना है. And it can be a very scary thing also initially. But thankfully, now we have all these casting directors who have their official accounts, and we have a casting system in process, right? तो कुछ बहुत अच्छी कास्टिंग एजेंसीज हैं जहाँ पे आप अपना पोर्टफोलियो भेज सकते हैं, आप अपने 2-3 पिक्चर्स, बेसिक हेडशॉट्स, एक सिंपल इंट्रोडक्शन वीडियो जिसमें आप अपनी बेसिक डिटेल्स बता रहे हैं, ये 2-3 चीजें आप उन्हें ईमेल कर सकते हैं अपने एक्सपीरियंस के साथ, इवन इफ यू आर फ्रेश आप उन्हें भेज सकते हैं, सो दैट दे नो ओके दिस इज what you look like, this is who you are, this is where you come from। और फिर उनके पास कोई भी कास्टिंग रिक्वायरमेंट है then they will send you the audition। um, I think it's very Or inspiration for taking on the role of Shubra in UP 65 and how actually all this process started? oh the process started for me with an audition. That's how most of the projects for newcomers in the industry start. I auditioned with Taran Bajaj sir, who's a casting director, and after a few days I heard back. I had a meeting with my director Gagan sir, and I remember when I received the audition script and when I read the character sketch for Shubra, I was very excited because she was described as the girl who's like a breath of fresh air. She's born and raised in Banaras, and she's very intelligent, very confident, full of life, loves to help everyone around her. And actually, in the character sketch, it said that she runs her own NGO and she has her own blog called positiveindia.com. So it just made her such a nice human being that I was really, really excited to test for the part. And when I got the part, I was really happy that I'll get to play this, even though we've not really explored that side of her in the show yet.
So, as you said that you are from Chitrakoot, you are from UP actually. You think that you knew the background, you had some idea about the language and other things and the surroundings. Did all that also help you in bagging this role of Shubhra? I don't know if it did, but it's true that I am from यूपी। और जब मुझे स्क्रिप्ट मिली थी वो शुद्ध देवनागरी में लिखी हुई थी। और मुझे अच्छा। लगता है मेरी हिंदी ठीक ठाक है, अच्छी है। और मुझे बहुत मजा आता है शुद्ध हिंदी में बात करने में भी। हम्म। तो ऑडिशन ही उस प्रकार का था। हम्म। और जब हमने शुभ्रा के कैरेक्टर को और एक्सप्लोर किया, तो हम्म। हमने एक्चुअली वी मेड हर इनटू दिस गर्ल who is really rooted in the place that she comes from। मैं हम्म। वाराणसी कभी नहीं गई थी पहले, हम्म। पर हाँ मुझे लगता है वाराणसी काफी सिमिलर है। एनवायरनमेंट और जैसे बोलने का तरीका होता है, जिस तरह के लोग होते हैं, मैं जानती पहचानती थी। पर जब मैंने शो शूट किया तब मुझे लगता है आई गॉट टू नो द प्लेस अ लॉट मोर बेटर। एंड it was very enriching to be there and to experience all of that. But yes, I do think that I had some understanding of the area। कितना टाइम आपने वाराणसी में स्पेंड किया ड्यूरिंग द शूटिंग ऑफ UP 65? कितने कितने दिन की शूटिंग थी, कितना क्या प्रोसेस था? So actually, as you know, the show has two seasons and we have 13 episodes in each season. So हम्म। it's a lot of content. हम्म। But हमने अपना कॉलेज, जितना भी कॉलेज का पार्ट है वो वडोदरा में शूट किया है at this other engineering college, and हम्म। all the outskirts that you see of Banaras is the only part that we shot in Banaras. I don't remember the exact number of shoot days, but we went for a few days to Banaras only to shoot the outskirts. That's it. If I may ask you, what was the most striking and attractive element about Varanasi and about the entire different locations wherever you shot for UP 65? What you like the most about this, about the city and the place and the people? I love the city, absolutely, and there are no two ways about it। जब भी मुझसे कोई ये क्वेश्चन पूछता है, मुझे फर्स्ट डे याद आता है जब हम गए थे वाराणसी। एंड हम आई थिंक दोपहर को कुछ पहुंचे थे और शाम को हम चले गए घाट पे गंगा आरती के टाइम पे। And I remember the whole cast and almost most of the crew was sitting together, and we witnessed the Ganga Aarti on the ghats for the first time, and that was just so surreal and so magical, so beautiful. And I think that was such a positive welcome that the city gave us. And from there on, going to the sets every day, हम both से set पे जाते थे, अलग अलग घाट, अलग अलग गलियों में। वहाँ का खाना, वहाँ के लोग, सब बहुत प्यारे हैं। सबका दिल बहुत अच्छा है। आप किसी से भी बात कर सकते हैं और वो बिल्कुल आपको बहुत ही खुशी से, एक्साइटमेंट से उसका आंसर देंगे, उसके बारे में बताएंगे। तो बहुत अच्छा लगता है। बहुत, आई डोंट नो, वहां जाके लगता है कि आप यहाँ आ चुके हो पहले। इट फील्स लाइक होम। इट्स रियली नाइस। वहाँ के खाने के बारे में आपने बात की, तो वहाँ पे आपने आई आई माई माई व्यूअर्स एंड माई रीडर्स ऑफ द मैगज़ीन, ऑल ऑफ देम वुड लाइक टू नो क्या आपने वहाँ पे ट्राई किया, क्या आपको अच्छा लगा। और मुंबई में वो सब आप कितना मिस करती हैं? मुंबई के फ़ूड की बात करूँ, वाराणसी के फ़ूड की, आपके होम टाउन के फ़ूड की बात करूँ, तो क्या उसमें डिफरेंस है? क्या आपको अच्छा लगता है, क्या आप मिस करती हैं? दोनों जगह का बताइए मुझे। वैसे मैं एक्चुअली बहुत घर का खाना खाने वाली लड़की हूँ। मुझे बहुत पसंद है घर का खाना खाना। पर जब भी मैं ट्रैवल करती हूँ, देन आई लव टू एक्सप्लोर द फूड ऑफ द सिटी दैट आई एम इन। हुँ। और वाराणसी की आलू कचौड़ी, वहाँ की जलेबी, दूध जलेबी, वहाँ का पान, ओ माय गॉड, वहाँ का चाट। आई रिमेम्बर हर शाम हम वहाँ चाट खाते थे। तो ये कुछ चीजें हैं जो बिल्कुल ही, आई डोंट थिंक वो कहीं और मिल सकता है जो वहां मिलता है। व्हाट अबाउट मुंबई? मुंबई में क्या रिलिश करती हैं आप प्रगति? और कहाँ जाती हैं खाने? विच आर योर फेवरेट प्लेसेस टू ईट आउट इन मुंबई? इन थोड़ा मुंबई, बताइए कुछ इस तरह की अच्छी जगह जहाँ लोग जाएं, ट्रैवलर्स जाएं मुंबई में, और वो कुछ अच्छा, अच्छे खाने के अच्छे ऑप्शंस जो टिपिकल मुंबई के ऑप्शंस हो वो एक्सप्लोर कर पाए। मैं गलत इंसान हूँ ये पूछने। मैं बॉम्बे में रह रही हूँ 8 साल से। बट मुझे लगता है मैं बहुत घर में मैं अपना टिफिन लेके जाती हूँ जब भी मैं बाहर हम्म। जाती हूँ। बट आई थिंक मुंबई हैज ग्रेट फूड। आई थिंक आई लव द सैंडविचेस जो आपको मिलती है NMIMS के पास।
और I love going out to eat Chinese actually. So I love Okay. food which is Okay. in Kolaba and in Andheri. And Okay. I love this place called Veranda in Hmm. Bandra, which has Okay. really amazing food. Okay. Yeah, but I think अगर आपको street food के बारे में पूछना है तो I'm not the right person. मैं बहुत Okay. कम खाती हूँ. Okay, so we'll pass that. So tell me, coming back to your role as a role of Shubra, you played in UP65. What was the most challenging part of portraying Shubra, and what remained the most rewarding aspect on the part of playing the character? So to be very honest, I don't think it was very challenging for me to play the part. I think it was very exciting for me to play this part. I think Shubra is someone who's very close to me, or maybe I made her very much like me. She's very studious, she's very dedicated to what she does, she's all heart. तो उस तरह से मेरे लिए challenging नहीं था. I think what was challenging for me a little bit was how much we improvised on set. But वो भी बहुत मजेदार था टू बी ऑनेस्ट. सो माय डायरेक्टर गगनजीत सिंह, हर वो बहुत ही ज्यादा सेट पे आके सीन को उभारने में बिलीव करते हैं. तो हम हमेशा नए नए चीजों के साथ आते थे हर सीन में. तो एक सीन है शो में जिसमें वो कहती है अपनी रूममेट को कि काशी की पवित्र भूमि पे अगर तूने मल्टीपल प्रेमियों के साथ बात की ना तो तुझे शोभा नहीं देगा ये. समथिंग लाइक दैट शी सेज. How एंड cute. दैट इज समथिंग दैट वी came up with during while we were shooting it. So I think वो थोड़ा challenging था पर बहुत exciting भी था. um the most rewarding moment for me while playing the part, I don't know if it was during the shoot, but I remember when I was in Banaras, क्योंकि हम वहीं घाट पे टहलते थे और पूरे टाइम वहीं शूट करते थे. काफी लोग थे जो हमारा शूट देखने आते थे. और एक दिन एक मम्मा थी और उनके बच्चे थे. 4-5 बच्चे थे और वो सब भागते हुए आए. वो चिल्ला रहे थे पीछे से, शुभ्रा शुभ्रा. और इतनी आदत हो जाती है आपको जब आप एक शो इतने लंबे वक्त तक शूट कर रहे हैं कि यू फील, you turn whenever somebody says your character name, and I just turned back and I sat with them and I spoke to them for quite some time. और मेरे लिए वो मोमेंट बहुत स्पेशल है और बहुत यादगार है क्योंकि उन्हें लग रहा था मैं शुभ्रा ही हूँ और मैं यहीं रहती हूँ. और तो वो एक चीज है जो मुझे हमेशा याद रहेगी. ऐसे लोगों से मिलना और किसी शहर चले जाना और वहीं का हो जाना, इवन फॉर अ मोमेंट, आई थिंक इज वेरी स्पेशल. Absolutely. So, talking about your, the favorite memory from the set while you were shooting, anything else you would like to share, which you still remember fondly, and about your entire experience, or any other favorite memory you would like to share with us? You're saying a fond memory. Yeah. So this is a very light-hearted show, okay? Yeah. UP65 एक सिटकॉम है Hmm. और it's a coming of age story of this character called Nishant who falls in love with my character Shubra. And I think everything that we've shot is just has been so much fun. It's been very now that you've put me on the spot, I can't think of one. I can just think of so many. I mean, the whatever the best you can pick. ओके ओके, आई टेल यू. सो मेरा जो कैरेक्टर है शो में, शुभ्रा, वो ना प्रैंकस्टर है. तो बहुत स्मार्ट है, मतलब क्लास में एकदम फर्स्ट आती है, लेकिन जिंदगी भी फुल ऑन जीती है. तो बहुत मस्ती मजाक करती है, बहुत लोगों को बुद्धू बनाती है. तो शूट बस नया नया शुरू हुआ था और हम वडोदरा में गए थे. और एक दिन मैं सुबह बस अपने रूम में उठी हूँ और मुझे एक कास्ट फ्रेंड का कॉल आता है और कहती है कि आज शूट कैंसिल हो गया, प्लीज नीचे आ जा. एंड आई वेंट डाउन इन द लॉबी एंड हमारे लाइन प्रोड्यूसर और पूरी कास्ट खड़ी है और उन्होंने कहा है हम शूट कैंसिल कर रहे हैं क्योंकि ये कास्ट बहुत डिमांडिंग है. अगर आप लोग रेडी हो, आप बस से जाओगे तो शूट होगा. और वैनिटी वैन नहीं होगी, बस में आपको रहना पड़ेगा, अदरवाइज द शूट इज कैंसिल्ड. एंड आई गॉट रियली स्कैर्ड बिकॉज दे सेड फ्रॉम नाउ ऑन बजट, कटिंग डाउन द बजट, और अब से शूट नहीं होगा, आपको ऐसे करना पड़ेगा बिल्कुल शूट. अब झाड़ी के पीछे चेंज करना पड़ेगा, ऑल ऑफ दैट. और ये मेरा पहला शो है तो मुझे कुछ पता नहीं, मैं बिल्कुल शांत थी. And after a point, I realized that the whole team was involved in just pranking me because I Okay. prank everybody in the show. Okay. And I believed it.
And Okay. there were two teams, and they put me on the spot, and I got so scared. So I think that's a memory that I remember, in which I actually had a moment wherein I didn't know what to do, but they were just joking around. लेकिन शुभ्रा, आप मुझे एक चीज़, सॉरी प्रगति, मुझे आप एक चीज़ बताओ। अगर रियलिटी में सच में ही ऐसा आपको करने को बोला जाता, ये सच में ये एक ऐसी सिचुएशन होती, तो आपका क्या डिसीजन होता, तब आप क्या करते? तो वही हुआ मैम मेरे साथ, कि उन्होंने बिल्कुल बोला कि सारे कास्ट मेंबर्स मिले हुए थे, तो सबने कहा हम तो शूट नहीं करेंगे ऐसे, हम्म। हम बस में शूट नहीं करेंगे, हमें वैनिटी वैन चाहिए। और उन्होंने मुझ पे उंगली उठा के कहा आप बताइए आप हम्म। जाएंगी शूट पे कि नहीं। और मेरे जो हम्म। फर्स्ट एडी हैं आशीष, वो हम्म। बोले प्रगति आप बताइए, आप चलिए मेरे साथ शूट पे अभी। और मैंने हम्म। कहा था देखिए, हम सबको ना अभी अंदर जाके बैठना चाहिए और आराम से बात करनी चाहिए कि क्या प्रोडक्शन के इश्यूज हैं और क्या एक्टर्स के इश्यू है, लेट्स कम टू अ कंक्लूजन। तो ओके। उस टाइम भी मैं मैंने वही कहा था जो मैं रियल लाइफ में कहती कि कोई रैश वे में हम डिसीजन नहीं लेते हैं, आराम हाँ। से बात करते हैं। और सब बहुत हाँ। डिसअपॉइंट हो गए थे, क्योंकि उन्होंने एक्सपेक्ट किया था मैं चिल्लाऊंगी या मैं परेशान होंगी। पर हाँ। उस मोमेंट पे मैं बहुत काम थी। हाँ। और मुझे लगता है कभी भी कोई प्रॉब्लम हो तो आपको एक गहरी सांस लेके आराम हाँ। से सोचना चाहिए सोल्यूशन। पहले सोचना चाहिए, फिर उसका जवाब देना चाहिए, वेविंग ऑल द प्रॉज एंड कॉन्स, कि क्या आपके फेवर में है, क्या आपके फेवर में नहीं है, फ्यूचर देखते हुए। जी तो अब मुझे थोड़ा-सा अपनी करियर जर्नी के बारे में भी बताइए प्रगति। यूपी 65 से आपको मतलब हमने देखा, इससे पहले व्हाट ऑल यू वर डूइंग? आई हर्ड दैट आई हैव कम टू नो दैट यू आर फ्रॉम थिएटर बैकग्राउंड ऑल्सो, और कुछ आपने शॉर्ट मूवीज़ भी की हैं। तो प्लीज़ मेरे दर्शकों को आप प्लीज़ बताइए अबाउट, इससे पहले आप क्या-क्या आपने किया है? कौन-कौन सी लैंडस्केप आपने एक्सप्लोर की है इन द फील्ड ऑफ एंटरटेनमेंट? सो मैं बॉम्बे आई थी हुँ। मीडिया एंड मास कम्युनिकेशन पढ़ने। मुझे एक जर्नलिस्ट बनना था एक्चुअली। सो ओके। इट्स ऑलवेज लवली टू स्पीक टू अदर जर्नलिस्ट्स। ओके। आई वाज वेरी फैसिनेटेड विद टेलीविजन, एंड जब मैं छोटी थी तब मुझे बहुत मन था कि हाँ मैं बड़े होके एक्टर बनूंगी। बट हुँ। आफ्टर अ पॉइंट मैंने सोचा नहीं, आई वांट टू गेट इनटू जर्नलिज्म एंड आई वांट टू डू एडवर्टाइजिंग। हुँ। तो मैं एक्चुअली एक एडवर्टाइजिंग कंपनी में काम कर रही थी जब ओके। मैंने डिसीजन लिया अपना जॉब क्विट करने का और एक्टिंग स्टार्ट करने का। हुँ। और जब मैंने डिसाइड किया कि मुझे एक्टर बनना है, मुझे पहले पता था कि मुझे एक्टिंग सीखनी है। हुँ। मुझे मन है जानने का कि लोग ये कैसे करते हैं। हुँ। तो मैंने अपना पहला एक्टिंग कोर्स सौरभ सर के साथ किया था, उनका नाम है सौरभ सचदेवा। ओके। वहां से मैं एक यूथ थिएटर ऑर्गेनाइजेशन है थेस्को, हुँ। जो यूथ को अपॉर्चुनिटी देते हैं एक प्ले स्क्रीन करने का पृथ्वी थिएटर में, हुँ। जो बॉम्बे में है। हुँ। अ, उनके लिए मैंने अपना एक प्ले स्क्रीन किया। जो संजना कपूर जी जिसको मेंटोर करती हैं पृथ्वी थिएटर, इट्स द सेम ना? यस, कुणाल ओके। कपूर इज वेल। या, यस। उनकी सिस्टर। यस। ओके। सो दैट थिएटर एंड हुँ। वहां पे मैंने अपना पहला प्ले स्क्रीन किया। हुँ। और उस प्ले पे काम करते हुए हमने 4 महीने उस प्ले पे काम किया। एंड ओके। दैट्स व्हेन आई रियलाइज्ड कि मुझे ये भी जानना था, जब मैंने पहले पहले एक्टिंग स्टार्ट की, कि क्या ये कोई चीज है जो मैं लाइफ लॉन्ग कर पाऊंगी, क्या एम आई इवन गुड एट इट, विल आई इवन अंडरस्टैंड इट। हुँ। और वो जो प्ले है वो वर्ल्ड वॉर 2 पे बेस्ड था। ओके। तो उसके लिए हमने बहुत डॉक्यूमेंट्रीज देखी वर्ल्ड वॉर 2 पे। हुँ। और ये दो बहनों की कहानी थी और कैसे वो बिछड़ गई ड्यूरिंग वर्ल्ड हुँ। वॉर ओके। एंड ड्यूरिंग दैट होल प्रोसेस आई रियलाइज दैट एज एन एक्टर यू गेट हुँ। टू लिव इन अ डिफरेंट वर्ल्ड व्हेन हुँ। यू आर ऑन अ प्रोजेक्ट। हुँ। एंड दैट वाज इनफ फॉर मी टू अंडरस्टैंड दैट दिस इज व्हाट आई वांट टू डू। तो हुँ। फिर उसके बाद मैंने और कुछ प्लेस किए, एंड देन कोविड हैपेंड, एंड आई डिड अनदर वेब शो दैट hasn't released yet. And ओके। then I auditioned for this web show and I did this. But I did a lot of things in the middle. I started acting in 2018. हुँ। So I knew that I wanted to start with theater, but then I did everything that I could possibly to learn what happens behind the camera first. So, what did you enjoy the most, and what did you like the most? I mean, what if you're asked to compare between theater and between web series, or between Bollywood or movies or a big screen, what would you like to choose? And how has been your experience of working on different verticals?
I don't know if any actor can actually choose. I can't, I think. I think all of these mediums are very different. Hmm. Um, I enjoy stage a lot as an actor because as an actor, a lot more is in your control. On a film set, a lot of things are out of your control. Hmm. Uh, but I think that I've learned immensely from both. I think when you're on a film set or on a web show set, whenever you're on screen, it's really important to be present and to be spontaneous with all the preparation that you've done. Hmm. So that for me has been the greatest learning. And in terms of theater, I think it's just such a beautiful medium where you get to tell your own story as an actor and you just get to perform on stage. So that's a different feel altogether. I enjoy both equally, actually. So, if I ask you about representation of women in web series, what's your take on that? How comfortable you are with that? I think I think, as you know, slowly times are changing, and there are a lot more stories headlined by women. And we have some great actors and actresses in our country who are really choosing those stories and choosing those scripts and talking about those. Uh, but yes, of course, there's always like hope for more. There are so many things that we can still shed some light on a lot of topics. But I'm actually very happy with the way the industry has opened up to new writers and new actors and new directors, and everybody has a chance to kind of try and take the opportunity. So it's actually a really good time. Hmm. So there used to be a lot of competition and a lot of struggle for many aspiring artists or people who were doing artists who were doing theater. So now with emergent with web series being there on the horizon, a scenario has changed greatly for these aspiring professionals, and they have a platform and a place to give vent to their creativity. So I hope you feel the same on that. Yes, absolutely. Absolutely. It's such a great time for all the actors to have a chance to test for so many projects. I think as an actor, you get to audition for so many projects. और Hmm. वो भी इतना exciting है. And then to have the opportunity to work with so many new directors, Hmm. apart from all the established ones. Hmm. Uh, this is a great time. I absolutely agree कि सबको मौका मिल रहा है और बहुत अच्छा है Hmm. क्योंकि हमें नया काम देखने को मिल रहा है और बहुत Hmm. कुछ नया देखने को मिल रहा है. तो कुछ ऐसी एडवाइस जो आप एस्पायरिंग एक्टर्स और एक्ट्रेसेस को देना चाहेंगी हु वांट टू ट्राई देयर प्रॉस्पेक्ट्स फॉर थिएटर और फॉर वेब सीरीज़, हाउ टू गो अबाउट इट? क्या प्रोसेस होता है, वो कैसे ऑडिशन दे सकते हैं, कैसे पता कर सकते हैं कि कहाँ पर ऑडिशन देने की ज़रूरत है, और फिर ऑडिशंस के टाइम में किन चीज़ों का ध्यान रखना ज़रूरी है? थोड़ा सा अगर ब्रीफली इफ़ यू कुड थ्रो लाइट ऑन दिस. Of course, absolutely, because I think for anybody who begins their journey as an actor, आपने बहुत अच्छा question पूछा है. I really would like to applaud you on that because for every aspiring actor, it's a very it's a road not taken. किसी को नहीं पता होता कि क्या करना है, and it can be a very scary thing also initially. But thankfully, now we have all these casting directors who have their official accounts, and we have a casting system in process, right? तो कुछ बहुत अच्छी कास्टिंग एजेंसीज हैं जहाँ पे आप अपना पोर्टफोलियो भेज सकते हैं. आप अपने 2-3 पिक्चर्स, बेसिक हेडशॉट्स, एक सिंपल इंट्रोडक्शन वीडियो जिसमें आप अपनी बेसिक डिटेल्स बता रहे हैं. ये 2-3 चीजें आप उन्हें ईमेल कर सकते हैं अपने एक्सपीरियंस के साथ. इवन इवन इफ यू आर फ्रेश, आप उन्हें भेज सकते हैं सो दैट दे नो ओके दिस इज व्हाट यू लुक लाइक, दिस इज हु यू आर, दिस इज वेयर यू कम फ्रॉम. और फिर उनके पास कोई भी कास्टिंग रिक्वायरमेंट है देन दे विल सेंड यू द ऑडिशन. आई थिंक इट्स वेरी freely available on Instagram and Facebook. Agencies like Casting Bay, there is one called On My Payroll, Nandini and Shrikant. So they do amazing casting. शुभम एंड त्रिशांत सर, इन सबके आपको सोशल मीडिया पे अकाउंट्स मिल जाएंगे और ईमेल आईडीज मिल जाएंगे और आप उन्हें सिर्फ ईमेल कर सकते हैं. एनीबडी फ्रॉम अराउंड द कंट्री कैन डू दैट. सो जहां तक कास्टिंग की बात है, it's become a very open and accessible process which was not there when I started out actually even then. Uh,
So it's wonderful. And in terms of theater, I think actors should watch plays if they're interested in theater. They should just go out there and watch plays. और प्लेस देखने के लिए आपको सिर्फ बुक माई शो या इनसाइडर पे जाना है, या फिर आप पृथ्वी चले जाइए जुहू में, या फिर आप एनसीपीए आ जाइए नरीमन पॉइंट के पास। आप बस वहां जाइए, आप कोई प्ले देखिए, आप लाइव परफॉर्मेंसेस देखिए, और आई थिंक आप बहुत सीखते हैं परफॉर्मेंसेस देखकर भी। मैंने बहुत सीखा है। आई वॉच्ड अ लॉट ऑफ प्लेज एंड I've had like life, I've had amazing experiences watching some of the biggest actors of our country perform on stage. So I think that it can be a very great learning for actors. तो आप ये कर सकते हैं, और फिर जब आप नाटक देखने जाते हैं, आप उन लोगों से मिलते हैं, और आप किसी के साथ भी मिलके नाटक कर सकते हैं। यू डोंट नीड एनीथिंग, इट्स जस्ट अ ग्रुप ऑफ पीपल हैव टू कम टुगेदर एंड जस्ट परफॉर्म। ट्रू। तो आप प्ले की बात करें तो आप किससे सबसे ज़्यादा प्रभावित हैं? कोई ऐसा रोल मॉडल जिनको देख के, जिनके काम को, जिनकी परफॉर्मेंस को देख के आपको बहुत इंस्पिरेशन मिली हो, आपको बहुत कुछ सीखने को मिला हो? इफ़ आई आस्क यू टू नेम अ फ्यू, वन और टू पीपल, whom would you like to name? आई एम श्योर you've seen Vinay Pathak sir's work. Of course. So, if you haven't seen him perform on stage, you should go watch this play called Nothing Like Lear. It's Okay. an adaptation of a play written by William Shakespeare, Okay. and वो ये solo performance करते हैं. Hmm. I saw that once, ma'am, and I remember coming out uh, of the theater and just sitting on the stairs, and it's been one of the greatest performances that I've ever seen. Hmm. It's just Sir on stage for an hour and a half, and he takes you through all the emotions possible. Hmm. Uh, that's one performance that's really stayed very close to me. And a few other people actually who are new people in the theater circuit are doing really well. Aditya Raval, I just saw a play that he's written, and there are a few people who are performing in it. It's called Siachin, Hmm. and I really enjoyed the writing of the play. And of course, you can go watch Nasir sir perform at Prithvi. Yeah. That's He's a veteran. yes. He does this play called Einstein, which Hmm. is wonderful. I mean, I can go on and on. There are Hmm. so many. आप बस कोई भी play देखने चले जाइए. I can guarantee you that you'll come out of it learning something. तो प्रगति ने कितने प्लेस देखे अब तक? If I ask you to count on your fingers how many plays you have watched so far. I don't know how to answer that. मुझे ऐसे टिकट संभाल के रखने चाहिए थे, पता नहीं। पर मैं जब अंधेरी में रहती थी, मैं पूरी कोशिश करती थी कि अगर कोई नया नाटक आया है, मैं वो जाके देखूं। तो Hmm. इन द पास्ट 3-4 years, I don't want to give you a random number, Hmm. but I would at least go once a week and watch something. और प्रगति, कभी आपको मौका मिला मिलने का नसीर सर से या विनय पाठक जी से या किसी और परफॉर्मर से जिनको आप बहुत एडमायर करती हैं, आपको मिलने का, उनके साथ बैठकर बातचीत करने का या उनसे कुछ लर्न करने का, कुछ गुफ्तगू करने का कुछ मौका मिला उनके साथ आपको? जी, जी। एक्चुअली यही जो मैं प्ले की बात कर रही थी, नथिंग लाइक हम्म। लियो, इसके बाद ही विनय तो यूजुअली जब प्ले खत्म होता है उसके बाद जो भी परफॉर्मर्स हैं वो बाहर आते हैं और वो सबसे मिलते हैं। तो आप मिल सकते हैं हर एक परफॉर्मर से और एक्टर से। और हम्म। मैं विनय सर से मिली थी, एंड आई सैट विद हिम एंड आई हैड टोल्ड हिम दैट इट्स रियली दिस इज, वो नाटक देखने के बाद मैंने अपने पापा को कॉल किया था। वो इतना इफेक्टिव, इट इज अबाउट अ फादर एंड हिज स्टोरी विद हिज डॉटर। तो हम्म। मैंने कहा था इसने इतना इम्पैक्ट किया है मुझे पर्सनली, और मैंने खुद अपने फादर को कॉल किया, एंड ही वाज हम्म। वेरी काइंड टू एक्चुअली हैव अ कॉन्वर्सेशन विद मी हम्म। एंड टॉक टू मी थ्रू इट। हम्म। तो या, ओके। तो ऐसे कुछ परफॉर्मर्स जिनके साथ आप काम करना चाहें, आपको आपको एक डिज़ायर हो कि मुझे इनके साथ में काम करना है या मुझे यहाँ तक पहुँचना है? आई वुड लव, अब आपने नाटकों की बात की है तो मेरे दिमाग में वही आ रहा है। जिम सर ने एक प्ले किया था, उन्होंने किया था एक नाटक जिसका नाम है कॉन्स्टलेशंस। हम्म। हम्म। मैं उनसे कभी मिली नहीं हूँ, एंड आई हैव नॉट हैड द अपॉर्चुनिटी टू टॉक टू हिम, बट आई हम्म। रिमेंबर आई वॉच्ड दैट एट एनसीपीए, एंड हम्म। मैम ही वाज जस्ट magical. He was so
his performance was mesmerizing on stage, and he had performed it with Mansi Multani, who's also um, a really, really great actor. So I'd Hmm. love to go have a chance. I'd love to have an opportunity to work with him. He was great in Padmavat also. Many people know him because of Padmavat, the way he played his role in Padmavat. Even Rocket Boys, ma'am. Rocket Yeah, Boys has done so yeah. good, and he's absolutely wonderful in it. Hmm. If I ever have an opportunity to work with him, it'd be great. Would. Great. So if we get to interact with him, we had him on our cover also of the magazine Yes. last year. So we if we again get an opportunity to speak to him, we'll definitely convey your desire also to work with him. Maybe that will also help you a bit. But I'm sure you will back the role with him on your own credentials. And so, Pragati, I also wanted to ask you which medium now in future, if you are given some meaty roles on web series and some good roles in Bollywood, and you have a choice of choosing rather a role in a theater, a performance in a theater, something which is really power packed and performance driven role for a theater, performance. What would you like to choose? Which one would you like to choose? I really hope I can do both. You're putting me in such a difficult spot. Genuinely, I think my aspiration as an actor is to be able to do screen work and theater work throughout my life till the day I die. I want to do both, because I think both the mediums really help you, and I really enjoy both the mediums to the core. Hmm. But right now I think I'm actually very, very excited to do a lot more on screen, because I think this is just my first web show and I want to do a lot more. I'm a Hmm. huge fan of musicals. I've grown up on Bollywood, Hmm. and I'd really love to have an opportunity to work with some of the filmmakers that I really admire, Hmm. and play some characters that have a story to tell. Hmm. It'd be very nice if it So how happens. do you how you think that the rise of web series, web shows has actually impacted the theater industry? It has impacted the Bollywood to a great extent, but how you think it has impacted the theater industry as well? Rise of OTT, how has that impacted the theater industry? I'm sorry, I don't really know. I mean, I can just give you my opinion on it, but what I have seen is that there are a few theater artists who are getting recognition now, because they've done some work on screen, so people come and watch their plays as well, which I think is a great thing, because we need more people to watch plays. There's this actor called Ajitesh Gupta. Hmm. He won. He does this play called Jo Duba So Par, which is a fantastical musical. It's a wonderful play, and he's also done some really great work on screen right now. Hmm. So I think there are actors who are able to maintain, uh, a balance of working in both the mediums, Hmm. and it's complementing each other. So Hmm. it's only working in a very good way, I think. Hmm. Hmm. The rise of OTT is helping everyone reach out to more people. Right, true. So tell us something about your future plans. What future holds for you? What is there in the pipeline now, which we can see soon? So, as I told you, I'm not sure if I did actually. I shot for a web show in Arunachal Pradesh during Okay. the second lockdown, actually, Hmm. when the second wave of COVID hit the country. Hmm. Uh, that's the first web show that I shot for. And this is the second, technically. Hmm. But that hasn't released yet. So, Okay. I shot that in Arunachal Pradesh, and I played the lead opposite Anshuman Jha in it, and it was a wonderful experience. That's also a show that's really, really close to my heart. It's directed by Victor Mukherjee, Hmm. and I hope that comes out. I don't have anything else. I hope I get to do a lot more work, Hmm. but So that's something that I've worked on. okay, so that reminds me that you have actually during your shootings and during your work, you have traveled to most serene and beautiful, destinations in India. The domestic, destinations, you have been to. Which one is your actually favorite travel destinations in India and abroad? And what did you like most about Arunachal Pradesh? I'm sure you spent quite a some time in Arunachal Pradesh. So what did you like about the place the most?
You've rightfully put it, ma'am. I feel very grateful that as actors, you really get an opportunity to travel and Travel. meet new people and experience new cultures. When it comes to Arunachal Pradesh, I was very, very surprised to see how the people of the state are so well versed with the music Hmm. industry. They are so passionate about music, and Okay. they're all so talented. I Hmm. remember when we were doing the shoot, we had people who were driving us, and then we would stop at a particular place or a restaurant, and they would start singing on stage, and it would Hmm. suddenly be a concert. Hmm. So people are very passionate about music. It's so beautiful. It's so lovely. The place is extremely beautiful, and you can experience extreme cold when you reach the top. And then it's also very like serene um, otherwise. So the weather is amazing. The air is Pure. pure. The people are very warm. They're very intelligent. They're very aware of international affairs, and they're Hmm. very passionate about music. They're Hmm. very welcoming. The food is amazing for non-vegetarians, even though Hmm. I was a vegetarian, so I couldn't enjoy that a lot. But they have amazing non-veg, and yeah, so it's a very, very culturally rich place. So, what do you like to do the most? What is your favorite thing to do while you travel? My favorite thing to do while traveling is to travel, keep traveling, and not come Okay. back. I Okay. love traveling, but I think I like to be in nature. That Hmm. really makes me happy. This Anything very adventurous that you have explored, you have done while traveling? I've done a few treks. I don't know if that's adventurous, but I Hmm. remember I had gone for a course in Pondicherry, Mm-hmm. and something that I really enjoyed doing in Pondicherry was just ride a scooty in the middle of the forest. Okay. It wasn't adventurous at all, but I could just ride there all day long. So I think I just really like being around trees. If there is anything you think I have left out which you want to share, you can still do that. No, ma'am. I've actually had such a great time talking to you. Even though this is online, it felt like it was in person. And I hope that you watch our show and you please tell me what you think about it. Please, it's a sitcom and it builds up. So don't stop after the first or second episode. Keep on going, and then the story keeps unfolding. I hope you enjoy, and I look forward to knowing what you really think about the show. Of course, I would let you Very know. excited to all the opportunities that probably do Hmm. come my way, and I'll try and give my best to each one of them. Chalo. Thank you so much, Pragati. All the best. Good luck. Take care. Bye Thank bye. you so much, ma'am. You too. Bye. I'll speak to you Bye. soon. Bye. Bye.